the October 18th, 2007 terrorist attack in Karachi. But she never gave up, nor was she deterred. And her bravery, her courage, her determination mirrors the bravery, the courage, the determination, the sacrifice of the people of Pakistan. As a Muslim, as a Pakistani, as a victim of terrorism, I believe it is time we move away from some of the Islamophobic narrative framing of this issue that took place after the awful attacks of September 11th, 2001. Because what we have witnessed from that date up until now is that terrorism, of course, knows no religion, knows no boundaries. It is important for us to consistently emphasize. I remember still growing up and hearing quotes from world leaders, such as, not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. And unfortunately, we find ourselves in an incredibly odd situation, where me as a Pakistani, as a Muslim, as a victim of terror, I am not defined. My country is not defined, my people are not defined by the bravery of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and the thousands of other Pakistanis that have stood up and given their lives to these terrorists. We are defined by those who carry out these acts just because they call themselves Muslims. Till this day, yesterday, when I was contributing at the ministerial meeting, at the UN Security Council on the reform of multilateralism, and I requested the UN Security Council that the issue of Kashmir is an issue that should be solved through multilateralism, through the United Nations Security Council. In response to that, I was told that because Osama bin Laden was found in Pakistan, I should sit down and shut up. The fact of the matter is, Osama bin Laden is dead. He was never a Pakistani, and he does not define the people of Pakistan. He does not define the Muslim world. It is Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and countless other leaders and people across the Muslim world who have stood up to these terrorists. If you look at the data, more Muslims have been killed in terrorist attacks from 2001 up until 2022, just in sheer quantum of victims. So we demand to be recognized as the victims, not the perpetrators of terror. For us to all to own the principle, which I believe was also in some of the language put out today from the UN Security Council, that terrorism truly has no race, has no religion. And whether a terrorist shoots up school children here in the United States, conducts a suicide attack in Pakistan, attacks anybody, any institution in my neighborhood, in India, terrorists are terrorists, and we must all work together as an international community instead of victim blaming the Muslim world, the Muslim community. We must work with them. Before I arrived here in the United States, at the United Nations, the Interior Ministry of Pakistan shared
a dossier about the 2021? Yes. Terrorist attack in Johor town. इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में एक्सप्रेस न्यूज देखने वालों को मायरा खान की तरफ से खुशामदीद। आप देख रहे हैं शो शब देख। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की हाइलाइट्स। सर इस बंदे ते थोड़े ਜਿਹੇ पैसे लग जाना तो ये फकीर बन सकता है। चौधरी साहब कह रहे ने हाँ घोड़े ते डेक ना रखिया से मैं एक ही कहंदे अज चौंक विच जुआं दा रक्स वेखना। मैं सारे ऑफिस में आपको ढूंढ ढूंढ के थक गई, आप मुझे मिले ही नहीं। बेटा मैं केड़ा आटा वां जेड़ा मिलदा नहीं पिया, कमाल हो गई। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हवाई सफर पर चले गए हैं। मजे की बात है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे बल्कि यूरोप टूर पर हवाई सफर पर गए हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इटली के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल ऑफर्स भी किए हैं। हाँ, जाहिर है एवन फील्ड और शरीफ खानदान के अहवाल दुरुस्त करने का वाहिद यही एक तरीका है। छोड़े, मैं आपको दिखाने लगी हूँ आज का पहला सेगमेंट। अच्छा सुना, आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं जी। मुझे कहाँ पकाना आता है? क्या फेवरेट क्या है आपका? करेले गोश्त। करेले गोश्त। करेले गोश्त तो अच्छा बेहतरीन। और धनिया गोश्त भी आप खाते हैं? सुभान अल्लाह। हल्का जब पखा दूर लगा हुए 2 बारी हाथ धोते हूँ, साफ ना करे बंदा किसी चीज में। फर्शी बिस्तरा होवे ते प्लेट च सालन ना पावे क्योंकि ठंडा हो जाना। ये तो माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे 3 मिनट च 8 रोटियां खा जाते। कब की बात है ये? कई नफीस किन्ना पांदे हैं। बटेरे खांदे ने, तितर खांदे ने, तलौर खांदे ने, हाँ जी, मग खांदे ने। अल्लाह ने दिता ते खांदे ने, अल्लाह ना हाँ दवे। कदी आफ्ताब साहब डांटते भी सन? एहो जा मैं प्यार से डांटता था भाई, मैं डायरेक्टर था। हाँ, मतलब है डायरेक्टर का ये प्रेरोगेटिव होता है कि प्यार मोहब्बत से वो डांटता रहे। चाहे हो जी सस 2 घंटे नुआ कोलों कुटवांदी रहिंदी, इधरों कोट 2.5 घंटे बाद कहन देंदी कुटन तो पहले मैं ठीक सा, हुण तो ज्यादा थकाता भी तू पहले ही कह दे। अच्छा मानुल्लाह, अल्लाह तो देख रहा है। हम आपके दुआ गो हैं आफ्ताब साहब। बाद में हम आपके दुआ गो हैं। किसी गल नहीं मनना। फिक्र काट लें, काट देना। अच्छा मैंने कुछ सीरियस क्वेश्चंस करने थे। आप हुक्म करें सर। बीच में ही रह गया सारा। फनी जिंदगी का आगाज कब से किया, कहाँ से किया? 79 में ऐसे फिल्में देखते थे, भाटी रहते थे। वालदा मेरी जल्दी फौत हो गई, घर का वो सिस्टम ही खराब हो गया, स्कूल भी छूट गया। गुजरांवाला से आप लाहौर आ चुके थे? नहीं, गुजरांवाला मेरे ननियाल शहर है। अच्छा जी। तो जमपल आप लाहौर के हैं? गुजरांवाला लाहौर। अच्छा, जमपल यही है।